एंड दैट वाज द ओनली रीजन आई यूज्ड टू पुट माय कैमरास ऑन, क्योंकि मैं बहुत अटेंटिव रहता था फिर, बिकॉज आई वुड हाँ गो इन व्हाट्सएप और एनीवेयर, क्योंकि मैं कैमरा पे हूँ, तो दैट वाज हाँ, थिंग ये तो विच, रहता है कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं हाँ, इफ द डिस्ट्रैक्ट नहीं कैमरा होता। इज ऑन। एग्जैक्टली। तो बट एनीवेज कोई बात नहीं, आपका सेमेस्टर खत्म ही होने आया, तो विल एंड अप गुड, हम्म। दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो तो कोई दिक्कत। आज जो सर गौरव सर ने बता दिया था ना कि लाइक सारे ट्यूटोरियल्स और यस, असाइनमेंट्स जो दिए हैं, सब कुछ ही बता दिया वो उसमें ना। चलो, एक तो क्लैरिटी मिली। उन्होंने क्लैरिटी, मेरे को ऑलमोस्ट सब लोगों से क्लैरिटी तो मिल चुकी है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अब बस यही है कि वो बाद मैथ्स में जाके टीचर से बदल कहाँ ना जाए। मिली है? मैथ्स मैं, टीचर से। उन्होंने तो सबसे अच्छी क्लैरिटी दी, उन्होंने तो बोल ही दिया ना कि जो ट्यूटोरियल शीट है उससे ही आसपास आएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, तो हाँ, फिर तो सब नहीं दे दी फिर तो। मतलब हाँ, उन्होंने हम्म देखो क्या है कि मतलब आई एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम हिज हम्म टोन, क्योंकि वो भी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ना, उनको ओपन। ऑब्वियसली हाँ। तो उनका ये कहना था कि जो मैंने पढ़ाया, जो ट्यूटोरियल शीट में है एग्जैक्ट वही पैटर्न रहेगा, तो पैटर्न रहेगा मतलब वही डिफिकल्टी लेवल रहेगा। हाँ वही रहेगा। एंड आई गॉट सम नॉलेज फ्रॉम पास्ट लाइक प्रीवियस स्टूडेंट्स एंड ऑल, की थोड़ा सा सबसे टफ है यही मैथ्स वाले सर को टैकल करना, क्योंकि ही डज अच्छा। नॉट गिव्स दैट ओपन मार्क्स टू ऑल। और पेपर भी सही। वो थोड़ा सा मतलब, देखो ना आप क्विज, आप देखोगे तो क्विज में हाँ बहुत सही 90 बोला। था वो, मतलब ओपन बुक में भी पूरे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे। पूरे नहीं आ पा रहे बिल्कुल। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। पर ठीक है, फिर भी मार्क्स दे रहे हैं, मतलब कुछ भी स्टेप्स भी अगर हम लिख रहे हैं ना, तो दे आर गिविंग द मार्क्स, ऐसा Ma'am, भी नहीं है। this is ma'am totally perspective based, because I got calls and messages from our like friends only, who were telling that उनको दिए ही नहीं marks, 9, 8, 7, 6 ऐसे दिए, in spite of the fact that हाँ। they did questions correctly. So this is also the case. So we cannot bet on it. उनका मूड अच्छा है तो सब अच्छा है, नहीं अच्छा है तो हम बर्बाद है। हाँ वो भी है, तो हमें रिस्क नहीं ले सकते ना हम। हम रिस्क में ले सकते हैं, करेक्ट। हम्म। चलो, विल वेट फॉर 2 more minutes गाइस, बिकॉज 10:15 का बोला है। आज हमारे वो ट्यूटोरियल शीट करने वाले हैं, कोई नया टॉपिक? जस्ट अ मिनट अपेक्षा, जस्ट एक मिनट। ये सतीक्षा, आप कुछ पूछ रहे थे, आई एम सॉरी, आई हैड टू गो।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. प्लीज let me know if you are able to hear my voice. Yes, yes, you are audible. Great, thanks. uh PDF. Where is the tutorial sheet? Let me open it. Okay, so I guess we can start now. So the topic that we are discussing today is one of the important concepts. So because the question may arise from here, that is joint probability. Okay. Yes. ठीक है. तो joint probability. अच्छा, just one thing over here. Is there anyone who is not comfortable with Hindi? Just to be sure. Is there anyone who is not that comfortable in Hindi? So I'll continue in English और हम हिंदी पे switch कर सकते हैं. No, it's in like between both Hindi and English, okay, but pure Hindi may not. Okay, so I'll go with English only. Don't worry. No, you can mix also, but not pure. Yeah, I understood. Yes. Okay, so let's start with the joint probability now, guys. It's a really interesting topic. I'll give you the theory of it at first, why we are doing and how we will do it, and then we will do some questions from the sheet also to understand more about this concept. So let me start with this. Okay, so basically, how the joint probability came into concept. So till now we were only dependent on a single factor that can be happening, but since now we are introduced to a new term. I am writing it here. That is bivariate random variable. Okay. So this random variable made it possible to bring joint probability into picture for today. So I'm writing the definition of it. If you want, you can also note it down. So I'm writing it. Let S be a sample space associated with random experiments let x of t and y of t be two random variables, random functions, each assigning a real number to each outcome. Then outcome t belongs to S. Then x and y will be called as bivariate. So this is the basic what I can say theorem or theory of what bivariate random variable is. So what it's saying that till now we have only one function that we were working on. If you remember, for continuous and discrete we were using summation of x px, or for integration we were using integration of x into px, right? I'll write it here as I got new pad now. So okay, so yeah so for discrete case we know that we used to do summation of x times px for all x. Okay, and for continuous yeah, it was integration of f x times f x x, right? This integration and summation, this were for the discrete, and if you notice only one factor was responsible over here. One, or we can say one one function was responsible over here.
But now, since we are concerning for the two random variables, so over here, if you see, one is xt and other is yt, then we can get a combined probability that can be known as a joint probability, or we can say that function can be called as a bivariate function. Is this clear, or is there any doubt in this particular three-line theory that I wrote? If clear, I'll move forward. Yes, can you Sorry, एक Anshul, बार और फिर से बता सकते हो? हाँ हाँ, देखो, very easily, till now we were only dealing with one sample, one function px, right? Px, so x is a single variable that is changing, right? So only one factor, I can say only one factor that was responsible of handling things. Similarly in this case also, in both the cases. But now, since we are dealing with two factors, x of t and y of t, so function for x and function for y, now this function of y is also introduced. So in this case, we got two types of, right? So two types of random function. That's why it is named as bivariate random variable. Is it clear? In a very nutshell, I have told. हाँ, yeah, it's clear now. Sure, great. So theory is fairly easy. So if I say if x and y is a 2D discrete bivariate variable where x equal to x1, where x equal to x1 xi, and y equal to yj. Okay, then what? Then to prove the probability mass function for this, what it will be? There will be two conditions for this. That is that probability of I comma j for any point, it will be greater than zero, greater than or equal to zero. I'll tell you. देखो, if you remember in the joint probability, we used to make a table of 2D array, right? This was the table that we were using it. So maybe for 0 1 2 0 1 2 3. So consider this is 0.3. Okay, so what I'm saying from here, that if you fill this value, this all the values, that value should be at least 0 or greater than it. Okay, correct, got it? So this p of ij represent I being this and j being this. So j is going this way, I is going this way. So at any point p of ij, that particular probability value should be greater than equal to 0. And the second case, what it is told, that second case, it's told, I'm writing it here. It says summation of I to n, I to m, and summation of j equal to 1 n, p of ij should be equal to 1. I'll tell you, it is very simple. Basically, sum of all this should be equivalent to 1. That's what he's saying. Got it? This is what the two statements are given. I have explained you in type of question also. So if you are given to, I'll do the question, no, you will get the gist of it, that what I am saying with respect to this. Got it? Because we know that probability of everything will equivalent to be 0. Sum of all the probabilities is equivalent to 1. That's why the second condition may hold true in this case. And probability of each individual case cannot be less than 0, right? It cannot be less than 0. So this, in this case, the point number 1 satisfied. Okay, let's go on to the next board. How I can go? Yes, correct. अभी देखो, I'll tell you what is the marginal probability here. Marginal probability. Okay, I'll explain you in a very easier terms so that you will be able to digest this. So basically, marginal probability of x. So first of all, if I write marginal probability of x equal to x of I, what it will be subsequently be equal to? It will equal to, keeping that I as same, what will be the probability of all the points related to j? I'll tell you this. So I'll be writing j equal to 1 to m. I'll write p of I comma j, right? So what it will be, it will, if you observe here, it will be p of I1 plus p of I2 plus p of I3 and oh sorry, uh, just, yeah, perfect. P of I1, P of I2, P of I3 till P of IN.
ओके अभी देखो मैं आपको यहाँ पे एक ओके लेट मी कंप्लीट दिस थ्योरी फर्स्ट, क्योंकि उसके बाद आई विल बी गिविंग यू रियल टाइम सिनेरियो सो यू विल गेट इट मोर इजीली. Was anyone there to join? Okay. P of j, what it will be? Can anyone tell me what this can be? Seeing this pattern of on above, what I can write? So I can write P of 1 comma pj1 j, P plus P of 2j plus P of 3j plus dot 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 P of n comma j, right? Correct? And this will be m. Got it? Abhi dekho, I'll tell you it's very easy, dude. Don't worry about it. So for example, let's take a new slide and I'll tell you. Okay, so let's take this. I'm giving you an example. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको. एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा. द प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूशन इन सच अ वे दैट दिस विल बी x and this will be y. Y is going from 0, 1 and 2. Okay, just try to understand this at first so that in later time you will be easily able to do this. Okay, and y is ranging from 0, 1, 2 and 3. ठीक है, I'm writing the values right now to make you understand what is the marginal probability. So it is 1 by 36, it is 1 by 3, it is 1 by 6, it is 0, it is 1 by 12, it is 0, it is 0 and 0 0 0. Okay, अभी देखो ये जो मेरा point था, if you see this, what was my point over here? I was saying marginal probability of x with I is equal to sum of all the elements of that row. ठीक है, यहाँ पे देखो I am writing probability of x equal to x of I. If I start with I from 0, so x of 0 पे क्या जाएगा मेरा? तो it will be summation of probability of 0, 0 plus probability of 0, 1 plus probability of 0, 2. Right or wrong? Correct? That's what I have written here. ये देखो, if you see this, I have written the same. I, 1, I, 2, I, 3. So basically that's what I am trying to say. 0, 0, 0, 1 and 0, 2. Did you get it? Please, anyone can acknowledge me. So I Yes. of Can you so please what come is again? zero? Yeah, I'll tell for the second time. ठीक है, देखो सिंपल सी बात, चलो एक बार और अपन इसको देखते हैं. तो बेसिकली इन x ऑफ i व्हाट आई एम डूइंग, जो यहाँ पे मेरी x की वैल्यूज है ना, ये जो x की वैल्यूज है ना, फॉर ईच x वैल्यू, for each of this x value, I'll sum all this up and I'll get the marginal probability with respect to that x value. तो मेरा probability of x equal to 0 पे मेरी क्या marginal probability बनेगी? Sum of all these values. Got it? For 1, what it will be? It will be sum of all these values. For 2, it will be sum of all these values, and 3, it will be sum of all these values. Did you get it? So Got it, basically, my p of 0, 0 is 1 by 6, 0, 1 is 2 by 9, and 0, 2 is 1 by 36. So what will be the summation of it? It will be 15 by 36. Got it? तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the marginal probability of x and y in here? So I am asking what is the marginal probability. I am making it very easy to understand, है ना? Marginal probability of x and y पूछा है. तो see what you have to do. Understand what you have to do. You have to make a table. ठीक है, एक टेबल बनानी है in which there will be two of things. First one will be x. When we are dealing with marginal probability of x, I am explaining the case when we need to find marginal probability of x. तो अगर x का marginal probability है ना, तो you need to write x and corresponding to x, what is the value of summation at that point x. Got it? So I'll कुछ नहीं, I'll write x की सारी values. So x will be lying from 0, 1, 2 and 3. Correct? And subsequently I'll find the summation of all these values and I'll write it here. So for 0, what the value it got? 15 by 36. So at point 0 I will be getting 15 by 36. At point 1 what will I get? I will get 1 by 2. For point 2 I will get 1 by 12 and for point 3 I will get 0. So this is the marginal probability for x. Got it? समझ में आया ये आप लोगों को? Yes. 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 भी निकालनी होगी, right? हाँ, अभी I'll ask you guys, थोड़ा सा अगर आप brainstorming करोगे तो it will be easy. I need to find margin probability for y.
So what it will be, पहले तो ये बताओ what points will come in y. 0, 1, 2. Perfect. 0 1 2. अभी 0 के अक्रॉस में क्या वैल्यू निकालूंगा? 1 by इन 6, सबको 1 by ऐड 3, करूंगा. 1 by 2. करेक्ट? मैं इन Yeah. सबको ऐड करूंगा. So it will do 1 by 6 plus 1 by 3 plus 1 by 12. That will be subsequently equal to 6 2s are 12, 3 4s are 12 and 1. 4 plus 2 6 and 1 7. 7 by 12. तो मेरा 8.0 क्या आ गया? 7 by 12. And सॉरी मैं कुछ गलत किया क्या यहाँ पे? नहीं सही किया हूँ. Okay, 7 by 12. And for the next rest case, what will be? It will be 7 by 18, second case, and for third case, it will be 1 by 36. So did you get what is the marginal probability and how we find it for x and y? Yes. Did you get it? It's clear. It's clear. Perfect. That sounds great to me. Abhi, I know I went a step up to explain you. So let's let's go back to the initials and understand how we are getting the joint probability in this case. So I guess you guys understood what is joint probability at first. What are the conditions for joint probability? So the condition is P of I comma j should be always greater than equal to 0. If you see in this table, yeah, everything is at least greater than at least 0, right? It is because probability cannot be less than 0. That is the simple reason. Okay. And the second condition is summation of I equal to 1 to n, summation of j equal to 1 to n, P of I comma j should be equal to 1. That is, sum of all the probabilities should finally be equated to 1. Is it clear? Second हमने पढ़ा यहाँ पे कि what is marginal probability. So what is marginal probability? So for marginal probability, if I write with respect to x, I write it summation of, for I need to traverse for j. For when I am dealing with x, I need to traverse from j 1 to m. So what it will be? It will be p of I comma j. So अभी क्या होगा? I will be same and j will be loop. j हमारा loop करते जाएगा and it will sum up. Similarly, for marginal distribution of y, what it will be? This is j, right? So what it will be? Summation of I equal to 1 to n p of I comma j. Correct? Did you get it? And now the third thing and most important thing is I want to find whether my this joint probability is independent or not. Joint probability is independent or not. यश एक Yes. क्वेश्चन है. Yes. ये जो j इक्वल टू 1 टू m होगा या n होगा? यस p जो प्रोबेबिलिटी, हाँ ये वाला लाइन में. ओके, हाँ ठीक है. वो तो अभी m और n में कंफ्यूजन हो सकता है, बट जब अपने पास वैल्यू रहेगी तो फिर वो वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे क्योंकि हमें मालूम होगा कि j कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. ओके, सो ओके, इज इट गुड नाउ? Okay. So let's continue. So joint probability is independent or not if you want to find. So basically देखो हमें क्या करना है, बहुत easy है. It says, okay, it says probability of xy. Oh no, I'll write it here. Probability of xy is equal to probability of x, that marginal probability of x at that point into marginal probability of y at that point. अगर ये equal आ गया तो that means that our condition is satisfied and it is independent. So it should be, this should be acceptable for all the cases, for all values of x and y. If it agrees, then, and if even if one single value, if one single evaluation turns out to be wrong, then we can say it is not dependent, it is not independent. I'll tell you what I'm trying to say it. वही वाला example लेते हैं. And please keep this formula in mind. I'll explain you here. So what it says, if we try to see this graph, मैं एक बार और बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे. इस बार छोटा वैल्यू लेते हैं, राइट? इस बार थोड़ा छोटा वैल्यू ले लेते हैं. I'll take 0 1 2 and 0 1 2 and this will be my x and this will be my y. I can randomly type like I'm writing this as a garbage value, so do not take this into consideration anytime.
Okay, तो अभी in this case what I am trying to say it to you कि अगर if my condition this, so what it says कि if my p of xy, so I'll take x and y respectively. So when at first I should take x as 0 and y as 0. So p of xy means probability at point 0 comma 0. What is the probability at point 0 comma 0? It is 1 by 12. Okay, and for this p of x at x, so I need to find marginal probability of at x equal to 0. So at x equal to 0, what will be the marginal probability? इन तीनों को ऐड कर दूंगा, right or not? So it will be 12, 1, 3 4s are 12, and 3 4s are 12. So 4 plus 4, 8 plus 1, 9, 9 by 12. So 9 by 12 will be 3 3s are 9, 3 4 by 12. Okay, and I need to find p of y equal to y at 0. 6. Sorry? I think it will be 11 by 12. 11 by it will 12 be होगा. 11 by 12. Let me check. 6 to 12, 3 to the 6. Yes, 6. I'm sorry. It will be 11 by 12. Let me correct it. Actually, okay, let's do it. No worries. It will be 11 by 12. Okay. And probability at y equal to 0. So I'll add all these values. Correct? So what I'll get 1 by 12 plus let's do it 3 by 12. Okay, for better understanding. Plus 5 by 12. So it will be 5 plus 3, 8 plus 1, 9. 9 by 12. Will it be 3 by 4? This is this right now? Yeah. So now I need to multiply these two values and see is it equivalent to this value. If it is yes, then I need to check for 0, 0, comma 1. If it is also yes, then I need to check for 0 to comma 2. Until I get the first failure, I'll check this. And wherever I see that value match nahi kar raha hai, at that point I can prove that it is not dependent. And if I'm getting equivalent relation in all the 9 cases, then I can come to conclusion that yes, they are independent. Is it clear? Guys, is it clear to you? Please repeat. एक बार और रिपीट करो. कहाँ पे क्या चीज रिपीट करूं? मैंने ये बहुत कि सारा बताया. अगर 0,0 वाली वैल्यू शुड बी इक्विवेलेंट p of x and p of y, right? देखो. Do you understand this? बिल्कुल. अभी देखो, रिप्लेस दिस x by 0 and y by 0. अब देखो कहाँ का चेंज होगा. ये x 0 हो जाएगा and ये y 0 हो जाएगा, राइट? अब p of 0, 0 that means 1 by 12, right? P of x, 0 means marginal probability when x equal to 0, correct? P of y, p of 0, like marginal probability of y at 0 means this summation. तो ये सारा ये ऐड करूंगा and make value आएगा, and I'll add this and I'll get one value. If I multiply both values and I get equivalent to this 1 by 12, that means my condition is matching. ठीक है, समझ आ गया. Got it? क्लियर. इजी वे में समझ में आ गया. चलो, ग्रेट. Okay, so ठीक है. So I'll explain you one question of this and then we can go ahead. So ठीक है, मैं आप लोगों को WhatsApp के ऊपर एक क्वेश्चन का फोटो भेज रहा हूँ. प्लीज क्योंकि क्वेश्चन बड़ा, it will take time for me to write. So please check that. Yes, please let me know if you got that. Okay, so are you all able to get that question so that I can start? Hello guys, whom I am talking to? Yes. Yeah, you can start. We have now. opened एक बार it. मेरे को आके देखना पड़ता है कि मेरा इंटरनेट तो बंद नहीं हो गया. नहीं. Okay. Actually, was reading the question. It's okay, dude. Yeah, so so it's a question is like 2 balls are selected at random from a box containing 3 red, 2 green and 4 white. So I'm writing here what it's saying: 3 red, 2 green and 4 white. Okay. If x and y are the number of red balls and green balls, so it says x is the range for red ball. अभी एक बार इधर स्क्रीन पे आओ सब लोग and tell me
अगर x इज माय रेड बॉल तो रेड के क्या रेंज हो सकती है? 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3. Correct, perfect. And y denotes number of green balls. So what can be the range of y? Sorry, green. 0 1 and 2. Correct. Right. Right. Abhi it says that among this two balls are drawn from the box. तो कितनी बॉल ड्रॉ हुई है? Two balls are been drawn from the box. Find the joint probability of x and y. Okay. तो अभी अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली एंड इन वेरी स्मॉल केस यू विल गेट इट. तो पहली बात हमें मालूम है कि हमारे पास 3 रेड है, I have 2 green and 4 I have white balls. I am only picking up 2 balls. That can be any ball. Okay, so what my distribution can start with? So my distribution that is a cross join. I can say it's for probability at 0, 0. It can be it is at 0, 1 and so on. So let's understand फिर why am I doing this. तो पहली बात तो ये देखो कि can it be possible that I did not like draw any of the red ball or green ball and I draw 2 white ball? Is it possible? Yes, No, possible. not possible. Why not possible? I am choosing this is the box. I am choosing 2 ball out of it. So why can't I choose 2 white balls? हाँ वो तो कर सकते हैं. हाँ वो कर सकते हैं ना. तो आई नीड टू फाइंड फॉर एवरी पॉसिबिलिटी, राइट. तो सबसे पहली बात अगर हमने 2 वाइट निकाली और वी कैन से लेट्स कंसीडर दिस केस ऑफ 0, 0. सो व्हाट कैन बी अवर 0, 0 हियर. और अगर मैं आपको यहाँ पे पहले टेबल ही बना दूं तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा चीज को समझना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, सो आई एम मेकिंग अप दिस टेबल हियर x एंड हियर y एंड माय x इज अभी y क्या क्या है मेरा 0 है, 1 है एंड 2 है, राइट. x कहाँ से जा रहा है मेरा 0, 1, 2 एंड 1, 2 एंड 3. करेक्ट. अभी अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट वी नीड टू फिल ऑल द वैल्यूज इन हियर. तो यार ये समझ में नहीं आया कि x and y कैसे लिया हमने. x क्यों लिया 0 1 2 3. यार इन द क्वेश्चन इट इज गिवन राइट दैट x denotes the number of red balls. So if Okay. x denotes the number of red balls, so if there are 3 red balls, so then can be 0 1 2 3. हाँ. 0 balls can be selected, 1 can be selected, 2 can be selected and 3 can be selected, right? Yes. Got it now? Yes. Got it. Yes. And similarly, did you understand why we are selecting it for like y कैसे निकाल रहे हैं? हाँ. चलो, तो आगे चलते हैं. तो we need to find for 0, 0. So just a minute guys. Yes. So for 0, 0, tell me what can be the case for 0, 0. 0, 0 means I did not got any red ball, I did not got any green ball, but I got 2 of the white balls. And out of 4 plus 3 7 plus 2 9, I got out of 9 I got 2 balls. Correct or not? Yes, correct. So my evaluation will be 4C2 upon 9C2, right? Because 3C0 and 2C0 will subsequently equate to 1. So if I solve this, I'll be getting the value of 1/6. So my 0, 0 will be 1/6. Correct? So I had one question here. Please ask. Question. So right now in the box there are 3 types of balls: red, green and white. Correct? Yeah. ठीक है. अभी यहाँ पे if I say एक blue ball भी है, यहाँ पे हाँ. 5 blue ball और है. हाँ. ठीक है. हाँ. तो अगर 0 0 का बनाना है तो how we will do it? तो it's going to be 3C0 और 4C. अभी 2 select करनी है तो 0 0 का कैसे करेंगे फिर? वो क्वेश्चन था मेरा. Yes. I'll tell you this thing. तो अभी प्रॉब्लम देखो होता क्या है कि अभी के केस में हम पता है कैसे लगा रहे हैं फॉर्मूला. जब हमारे पास अभी केस है तो हम क्या लगा रहे हैं कि दिस क्वांटिटी इज x, दिस क्वांटिटी इज y एंड दिस क्वांटिटी इज यूनिवर्सल माइनस x माइनस y. करेक्ट. और आई कैन से टोटल माइनस x माइनस y. करेक्ट. तो हम अभी क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज वी हैव 2 वेरिएबल्स इनटू द हैंड. अभी अगर एक और आ जाता ना इसमें क्वांटिटी तो आई गेस वी वुड हैव टू टेक 3 वेरिएबल्स ओवर हियर ताकि हम फोर्थ वाले को इन तीनों के इक्वेशन में लेके आ सकें, राइट? Like z आ जाता, right? x y and z. नहीं, you are saying कि अगर एक और क्वांटिटी होती इसमें ब्लू बॉल और होती तो what you are saying कि
हाँ, तो अभी देखो, अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे रेड बॉल, ग्रीन बॉल, व्हाइट बॉल एंड ये जो ब्लू बॉल है, हाँ सारे ये 4 इवेंट्स हो गए, राइट? हाँ एंड 4 इवेंट्स को हम 2 इवेंट से सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे ना, राइट? हाँ तो हम हाँ 3 इवेंट को 2 से क्यों सॉल्व कर पा रहे? व्हाई आर वी एबल टू सॉल्व 3 इवेंट? बिकॉज इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ 2 इवेंट्स, definitely we have complete event, so we can subtract the 2 events from complete and we can get the third event, right? So okay that is the reason. Got it? got it. Chal, we can That means that this will be only valid for only three. Yeah, ask. Three balls. What? Sorry. Thing is, this particular technique will be valid only for 3 balls, right? अभी तो क्वेश्चन में 3 दिया है, इसलिए मैं 3 के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ. या ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको. तो बेसिकली देन आई विल फाइंड फॉर 0,1. सो 0,1 मतलब क्या? कैन यू डिड्यूस दिस? व्हाट दिस मींस? दिस मींस दैट नो रेड बॉल and 1 green ball, correct? And if this case, so definitely 1 white ball also. Am I right? So this will be 3C0 into 2C1 into 4C1, right? Right or not? एक बार वापस रिपीट करना. 0,1 Yes. एक रेड बॉल. 0,1 का क्या मतलब है? 0 represent number of red balls that are picked. हाँ, that is 0. So 0 means no red ball. No red ball. And 1 means 1 green ball. तो अगर 1 green ball हो गई 2 में से, तो एक फिर white ही होगी ना? हाँ, ठीक है. करेक्ट. तो 3C0, 2C1 and 4C1 upon 9C2. करेक्ट है? So I'll write the value. What I'll get is 2/9. चलो एक बार 0,2 के लिए चेक करते हैं, राइट? तो अभी आप बताओ मुझे कि क्या फॉर्मूला बनेगा. 0,2 मतलब कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? व्हाट डज दिस मीन? Red will be 0 and Yes. 2 green balls. Correct. And how many white balls? It may be possible 1 green and 1 white. How? यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब 2 सिलेक्ट की है. तो ही सेलेक्ट करनी है ना. हाँ, तो 2 green balls. So 0 white balls will be. करेक्ट. 0 होंगे ना व्हाइट बॉल, तो बस आएगा ही हाँ, नहीं. green will be 2 ना. Correct. So 3C0, 2C2 and 4C0. Correct? Upon 9C2. Please correct me if I am wrong here, or we shall go ahead. Okay, assuming you all are able to understand this, I am proceeding ahead. So for P of x 1,0, now what it will be? It will be 1 red ball selected and no green ball. So 1 red ball means 3C1, no green balls means 2C0 and 1 white, because अभी तक एक ही select हुई ना, that's why 1 white. So if we calculate it again, we will get 1/3. अभी इसका कैलकुलेट करके आप बता सकते हो 1,1 का क्या आंसर आएगा? कैन एनीवन सॉल्व इट वेरी क्विक एंड टेल मी? मैं वेट करता हूँ 1 मिनट आपके लिए. 1/6. Everybody, please spend this time in solving this question so that you will better understand what I'm saying. (1/6). 1/6. I hope you are able to get that 1/6. Acha, now can you solve for 1,2 and tell me what will be the answer for this? So who told this 0? Who told this answer? Mohit, it was. It will be 0 because we are only choosing You have to pick 2, two balls. and they are saying you have to pick 3 over here. 1 red and Can anyone explain why it will be 0? Okay, I guess you saw that into the sheet also that I have written 0. So you may confirm with your theory. But can you explain me why this is coming 0? Because यहाँ पे 2 बॉल सेलेक्ट करनी है और 2 + 1 3 हो जाएगा. Correct.
तो हमारे केस में वी आर सिलेक्टिंग ओनली 2 balls, but if we choose this category of 1 and 2, so it says 1 red and 2 green. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो that's why the probability of it will be 0. Got it? So similarly 2 by 0 का हो जाएगा मेरा 1 by 12, 2 by 1 again 0, 2 by 2 again 0, 3, 0, 0, 0. ये हो जाएगा. ठीक है, got it? Yes. यस अभी है ना क्या किया करो आप यहाँ पे इसके आगे ना इसका टोटल लिख दिया करो. मैं इससे एक बहुत अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ. तो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ इट, व्हाट विल बी टोटल मतलब इन तीनों का क्या सम होगा. तो इन तीनों का सम आई एम राइटिंग इट, प्लीज कंटिन्यू विथ मी हियर. 15 by 36, 18 by 36 and 1 by 36 I am writing 1 by 12 I am writing as 3 by 36. I am multiplying 3 by above and below so that I can add this value, that's why. Okay, got it? Yes. Yes, and similarly I will add this also values. So what it will be 21 by 36, 14 by 36, 1 by 36. Okay, तो अभी एक कंक्लूजन आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट कंक्लूजन विल बी कमिंग फ्रॉम हियर. इफ यू ऐड दिस ऑल, व्हाट विल बी द आंसर? Quickly, what will be the answer? Will be 1. 1. If you add this all values, what will be the answer? That's also 1. That proves my point that sum of all these probabilities will be equivalent to 1 because I have added this here, and I have got it 1. Got it? Got it? Yeah. So I guess we are pretty clear with this. And now can you calculate the marginal probability of x? Yeah, Because we this can is the answer. calculate 1 by 6, 2 by 9. बस इसके आगे मैं यहाँ पे x लिख के 0 1 2 लिख दूंगा, तो 0 1 2 3 लिख दूंगा, तो this will be my marginal probability with respect to x, if I am not wrong. Correct? Yeah. And marginal probability with respect to y, this will be, I'll write just 0 no sorry 0 1 and 2. 0 1 this will 2. be my, बहुत ज्यादा गंदी तरह से लिख रहा हूँ, but I know because I have made you understand this, so I guess you are able to get it. Correct? Yeah. And now it is asking that tell me whether they are independent or not, right? Tell me whether these two are independent or not. So what I will do, I will find for 0, 0. So what is my this at 0 means margin probability of x at 0? 15 by 36. By 36. What is my margin probability at y at 0? It is 21 by 36. If we multiply both of them, is it equal to 1 by 6? Anyway, is it equal to 1 by 6? 3 5s are 15. Yeah. 3 12s are 36. 3 7s are 21. 3 12s are 36. No way it is coming 1 by 6. No, it's not. At first point only we got the imposter and we say that no, they are not dependent. They are not independent. They are dependent quantities because they are not satisfying our value. So एक question में I made all the three theories clear to you. Correct? Got it? समझ में आ गया आपको? Let us silly question actually. So like in yeah, next please. we have Silly questions are welcome. Yeah, yes. Okay, thank you. So sorry. The second row, 18 by 36. How just you made it as a 36 for all those common? Yeah. I'll tell you. देखो, I would have done like if I add 1 by 3 plus 1 by 6, it would be basically 1 by 2, right? I guess you got 1 by 2. Yeah. अभी क्या होता? When I would be adding all this, I would see first value I'm getting is 15 by 36. Second value I am getting is 1 by 2. So ultimately I would have converted into 36. Yeah, correct. Perfect. Okay, got it. Yeah, so that's why I multiplied and divide by 18. So 18 by 36. And similarly in all the cases I do the same to just save your and my time, basically. Nothing more than that. Okay. So if in this case there are three variables which we have given like red, green and white, so we consider only two things actually. No. See, you are getting opposite of it. Do not think that like that. Just see the question. What is the question? Question says that x denotes the number of red balls and y denotes the number of green balls. Correct? Okay. You need to draw the joint probability for x and y.
I did not bother about white ball anywhere. I just calculated white ball because I need to find the actual answer for 0, 0. That's why I used white here. But I did not use white in any of the equation here. Did I use white? I used red and I used green. But I did not introduce white because white was no concern for me. White can be anything, any number. I do not care. I care about my x and y values, how they are changing and how the answer is getting. Got it? Clear. Thanks. Yeah, great. Okay, so let me give you one question here so that you can understand it. Uh, 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 uh. Yes. So I'm giving you a question here. Okay, you need to solve in 5 minutes, not more than that. So I have given you my joint probability distribution function as k times 2x plus 3y. Okay, I have given it to you. In exam this pattern will come, that's why I'm highlighting this, and I'm writing it as for x equal to 0, 1 and 2, and y is also 0, 1 and 2. Got it? Wait, my y will be 1, 2 and 3. Yes, y equal to 1, 2 and 3. So you first question is you need to find the value of k. Yeah, first question is find the value of k. Okay. अच्छा, I'll help you in initial so that you can do the rest on your own. सबसे पहले तो table बनेगी, and how the table will be populated very quickly. Tell me. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, x 2, x. and 1, 2 and 3. ठीक Yeah. है. अभी क्या approach होगा आपका? What you will do? What is going into your head right now? Other than कैसे exam होगा? So what's coming? I'll be taking x as 0, y as 1, and I'll put it here. And I'll find what is the value. So if I put x as 0 and y as 1, what I'm getting? I'm getting 3k, right? I'm getting is this as 3k. Did you all get it? How I did get 3k here? Yes. Yes. अभी आप लोगों को k निकालना है, तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि ये जो टोटल आएगा मेरा, ये जो टोटल आएगा यहाँ पे, टोटल ऑफ दिस यार 0 नहीं लिखूंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे. जो भी मेरा टोटल 1, टोटल 2 एंड टोटल 3 आएगा, हाउ मच विल इट बी इक्वल टू एट लास्ट? 1. 1, 1. So can you populate this all values and find what is the value of k and tell me? Yeah. एक बार करो. When you will do it, you will get it more clearly. I'm just coming in a minute. I'll bring my water bottle. So
गाइस कोई वेरीफाई कर सकता है क्या 3k के बाद 1,1 में 5k एंड 2,1 में 7k? या करेक्ट. करेक्ट ना? ठीक है. Yes, guys, I'm back. Did you got any of the answer? Is anyone up with the answer? One by 45. 1/70. Okay, so one I got 1/70, and one I get 1/45, right? Any more responses? Guys, 24 people are there, यार. थोड़ा तो ऐसा एकदम excitement लाओ कि we are doing some questions. Yes, on it, on it. Yeah, good, great. यश ये Yeah. जो मार्जिनल वाला आया था लाइक x का और y का ये इंडिविजुअली वन होगा या फिर दोनों का ऐड करके 1 होगा तो उस केस में तो 3 के 2 बार रिपीट हो गया ना, इसमें भी और इसमें भी, तो वो तो गलत हो जाएगा. माय क्वेश्चन इज लाइक राइट में हमने मार्जिनल ऑफ x लिखा एंड डाउन हमने लिखा मार्जिनल ऑफ y. Right. ये इंडिविजुअल सम करके वन आने चाहिए ना दोनों. हाँ, आप दोनों, हाँ बिल्कुल, इन तीनों का सम 1 आएगा और इन तीनों का सम 1 आएगा. ओके इन दोनों को आप सम नहीं कर सकते. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो इस वाली मार्जिनल में आपका 3k आ गया और इस वाली में भी 3k आ गया, तो आपका हर वैल्यू 2 बार रिपीट हो जाएगा. ओके ओके. चलो गाइस, 1 more minute. Let's see who are able to crack it. It's not that tough यार. That's why I gave it in time. Akshata, Ankush, Anshul, Aparna ma'am, others guys, bring it up. Yes, can you just share your screen Yeah. once again? Yeah. Keep this. Yeah. Is I K got one 2 over? response till now. Is K1 over 72? Okay, one answer I got 1/72. Okay. Yeah, at least. Yeah, 1/72. I also Okay, got 1/72 into 1/72 square. 2 people gave it. Same for me, 1/72 and 1/62. अरे 2 बार कैसे आ सकता है एंड अलग अलग कैसे आ सकता है? Mera, I think this one I Okay. got it as 62, but I'm Got not it. sure. Need to calculate. चलो लेट्स डू इट टुगेदर. ठीक है, अभी 0,2 मतलब क्या हो जाएगा? x is 0, y is 2, तो 3 2s are 6, 6k. 0,3 means 9k. 1,1 means 2 and 3 included, that is 5k. 1,2 is 2 1s are 2, 3 2s are 6, 6 plus 2 8k. Got it? And 1,3 is 6 is 9 plus 2 11k. Correct? And third case, 2,1 is 2 2s are 4, 3 1s are 3, 4 plus 3 7k. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 6 plus 4 is 10. 10. And 2 2s are 4 and 3 3s are 9, 9 plus 4 13k. Correct? Now adding this up, 9 plus 6 15 and 6 18k. 11 and 13 24k. 10 and again 30k. Got it? And adding Yes. this up, 7 plus 5 12 plus 3 16k. 8 plus 6 14 10 24k. And this is again 30k, I guess. 11 plus 9 20. No, 15k. this is Starting 33. wala, first wala. Yes, 15k. 15k. 50. Let's add this up. 18 plus this. It is 8 plus 4 12. 3 plus 2 6. 72. Sorry, 6 and 7. 72. 72. 72k equal to 1 k equal to 1/72. So this way and this way also, if we add, we will get 33 plus 24 plus 15, that is 4 9 10 11 12, 3
5 6 7 72. So it k here will be 1/72. So it cannot happen any time कि यहाँ पे और यहाँ पे k की वैल्यू अलग आ जाए, because ultimately it is evaluating to 1 and k is constant everywhere. It is not changing, so we cannot get. So Akshita, I hope you must have tracked your mistake. Yeah, I missed it too. You understood? यश आपने लास्ट में क्या ऐड किया? हाँ. This all t1 plus t2 plus t3. This all. Overall, y-axis or This x-axis equals का to last 1. total. Yeah. And please do not add this both. है ना, इन दोनों को ऐड करके 1 मत करना, क्योंकि दैट्स व्हाट आई टोल्ड कि अगर आप ये वाला मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ले रहे हो तो इसमें आपने 3k को इंक्लूड किया, और ये वाला ले रहे हो तो इसमें भी 3k को इंक्लूड किया, तो यू विल एंड अप एडिंग ऑल द वैल्यूज ट्वाइस. दैट इज नॉट द राइट वे. गॉट इट? तो प्लीज आइदर ऐड दिस 3 एंड इक्वेट टू 1 or add this 3 and equate to 1. Clear? Yes, yes. So always the sum will be the same. Yeah. For the x-axis and yeah, because this was our property. If you see here, this was our property at initial, that summation of all the values will be equal to 1. Got it? Yes, perfect. अभी marginal probability of x बता सकते हो फटाफट? बहुत तेजी से, बिल्कुल भी धीरे नहीं करना है. तो प्लीज टेल मी व्हाट इट विल बी. अभी इस बार आई नीड at least 15 people to answer so that you guys 3k, 5k, 7k, 0, 1, 2. अरे k तो आ गया ना, अब क्यों k बोल रहे हो? अच्छा हाँ. 0, 1, 2. So what will be the p of x here now? 3 For 0 what will be? Guys, directly substitute 1/72 in 18k. You will get it. 1/8. 1/4. 1/3 and 30/72. Please do calculate it later. But I'm sure this will be the answer only. And for y, p of y, for y, what it will be? It will be lying for 0. Sorry, it will be lying for 1, 2, and 3. And what value we will be getting? Can anyone tell me? All are there? 5/24. You just present it. 5/24. And then 1/3. And as well as 11/24. Yeah. 5/24. Correct. 5 3 are 15. 3 5 are 15. 3 24 are 72. Correct. 5/24. And the value is, second one is 1/3. Or yeah, 1/3 is correct. Yeah, correct. 11/24. 11/24. Correct. This makes sense. Great. Congratulations. You are able to do it. Okay. So now there is one more catch and case here. If it is given to you in the question, the same question I'm telling, okay, do not take it as a new question. But in the same part, if I am asking that what is the PMF, means probability mass function of x given that y equal to 1. Got it? What I am asking, probability mass function of x given that, this is a conditional probability. So what you need to find, that given that y equal to 1, how the value of x is changing. Correct? आप समझे? तो इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. Yeah, please listen to me very carefully. In this case, what I'll do, I'll tell you the formula first and then we will do it. Yes. So it says that you find that probability at that particular point x and divided by the probability of total for that particular. I'll tell you what I'm saying. तो अगर आपको बोला गया है कि आपको निकालना है conditional PMF of x given that y equal to 1, आपको बोला गया y equal to 1, मतलब you need to concentrate on only this value. And what you will find, आपका वैल्यू कैसा आएगा, वही आपका 0 1 2 ही बनेगा. यहाँ पे छोटा सा बनाता हूँ, 0 1 2 ही बनेगा. बट अभी 0 के लिए आपकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 0 के लिए आपकी वैल्यू आएगी वो पॉइंट 3k अपॉन टोटल 15k. गॉट इट? जो कि होगा 1/5. सिमिलरली 1 के लिए क्या होगा? 1 के लिए आप करेंगे 1 पे जो वैल्यू है
बेसिकली 1,1 पे जो वैल्यू है यू विल डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, दैट विल बी 1/3. सिमिलरली 1/2 के लिए आपका हो जाएगा 7/15. आई टेल यू, आप मुझे ये निकाल के बताइए. इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस, आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टूड दिस. I need to find conditional PMF. I need to find conditional PMF for y given x equal to 2. I hope you have that graph with, or you have this with you. And आपको भी क्या निकालना है? Can you tell me? आपको निकालना है when x equal to 2, y कैसे change हो रहा है. तो when x equal to 2 means I will log this x equal to 2, and what I will do for 1 I'll do 7k upon 30k, for 2 I will do 16k upon 30k, and for 3 I will do 13k upon 30k. Did you got it? Given condition को कैसे solve करना है? Okay, I assume you got it. थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें. तो बताओ, फिर बोलोगे तभी तो समझ में आएगा मुझे कि आपको इसका आंसर कैसे लिखेंगे यार कमेंट में? नहीं यार, इसका समझ में नहीं आया. मतलब ये समझ में आ गया कैलकुलेट कैसे करना है. ठीक है, देखो हम तो कॉपी करके उस पे नहीं लेकर आ सकते हैं क्या यार? दिस इज नॉट इन, लाइक दिस इज मैकबुक बट दिस इज नॉट आईपैड, सो आई कैन नॉट, आई विल चेक अगर हो पाए तो. मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसको. कट कर लो इसको. ये इसमें ऑप्शन आता है choose the cursor and try. नहीं कर्सर वो कर्सर आ ही नहीं रहा है ना, वो वाला कर्सर. नहीं वो सिलेक्ट वाला नहीं है, सिलेक्ट वाला पैन नहीं है वो. टी में एक बार देखना कैसे. एक काम करता हूँ, कुछ नया करके देख लेता हूँ. नहीं आया. नहीं ये मैं डाल देता हूँ यहाँ से अपलोड करके, अगर कहीं मुझे मिलेगा कहाँ पे है वो तो. 1 मिनट. अपलोड इमेज, डाउनलोड स्क्रीनशॉट. यस, आई होप यू गेट इट. यार इतना देर लगेगा तो तब तक तो मेरे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है चलो, तो मैं आपको एक बार और बताता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये वाले इस पे देखते हैं. तो हमें अगर निकालना है, हमें देखो अभी क्या था, अभी हमें ये निकालना, मैं रिफ्रेश करूंगा तो सब डिलीट हो जाएगा, जाने दो. आपको दिख रहा है ना ये, भले ही थोड़ा सा इट्स गोइंग क्लियर दिख रहा है. क्लियर. ओके ग्रेट. सो व्हाट आई टोल्ड, सी अभी तक क्या कर रहे थे, वी वर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन रिलेटेड टू x एंड y. उसमें क्या कर रहे थे, वी वर एडिंग ऑल दिस वैल्यूज, राइट? यही कर रहे थे. अभी आपको बोला गया है कि यू नीड टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन दैट y इक्वल टू 1. समझ गया? लाइक टेल मी कहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, फिर वहां से अपन उसको स्लो डाउन करेंगे. ठीक है, ये समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है. आई नीड टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x when y is given something, when y is given as 1. तो I need to restrictly do this for this particular case. हाँ समझ आ गया इतना कि when it is y. हाँ करेक्ट. तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाएगा, इट विल गो 0 1 and 2. एक काम करता हूँ तक मैं नया व्हाइट बोर्ड ही ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखते जाता हूँ जब तक वो अब हैंग ही हो गया शायद. ठीक है, तो या इट इज वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वी नीड टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. this is a symbol of given y equal to 1. so basically what I need to do, I'll write it as x and f of x at 1. सिंपल. अभी अपन लिखते थे f of x at x, अभी अपन लिखते हैं f of x at 1. and what do we write here, we write 0 1 and 2. why am I writing 0 1 2? because x is having the value 0 1 and 2. correct है? and now I need to find y. तो देखो अभी मेरे को किस पॉइंट पे निकालना है, 0,1 पे. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 at 0,1? इट इज 3k. so I'll write 3k upon the total of this all. what is total? 15k.
Got it? So this will be 1/5. समझ में आया आपको? अभी 1 वाले को देखते हैं. तो what we need to find? We need to find the 1, value 1 at x and y, that is y 1, 1. तो 1, 1 पे मेरी वैल्यू 5k है. 5k 5k डिवाइडेड बाय टोटल, 50 तो क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा. एंड सिमिलरली थर्ड केस में हो जाएगा 7k/15k, दैट इज 7/15. समझ में आया आप लोगों को? हाँ. अभी आ गया समझ में? Basically, you need to find that value at this point and divide it by the total what we are getting. ठीक है? देखो, बट एक मैं और टोटल से डिवाइड क्यों किया, क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या लॉजिक है इसके पीछे मैं आपको लाइक प्रोबेबिलिटी का लॉजिक आई नो, लाइक फेवरेबल वर्सेस टोटल, तो टोटल 15 है, बट कैसे हुआ ये? ओके, आपको गिवन की कंडीशन मालूम है ना? गिवन की प्रोबेबिलिटी ये क्या होता है? इट इज Yeah, x y equal to इंटरसेक्शन 1. y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y, यही होता है. आपको ये अभी लास्ट के 2 क्लास में हमने पढ़ा था. प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y. डू यू रिमेंबर दैट? राइट. What is probability of y? It is the range over y, correct? Range over y. And what is range over y? This total marginal, correct? 15k. हाँ, अभी 15k क्यों लिखा? क्योंकि हमें बोला ही गया है कि we need to find only for the range 1. Okay. So that's why at the bottom it came 15k. Bottom is 15k. Okay. And upper we need to find x intersection y. That means at when x equal to 0 and intersection and ही होता है, right? And union और होता है. तो x and y means 1 and 1 is 5k, 2 and 1 is 7k. That's why we wrote this thing. So, okay. है ना, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा था, but okay, if you are okay with understanding the derivation of it, so here is the derivation. Did you got it now? Okay, this works. Yeah, similarly if you want न्यूमरेटर में 3 कैसे आया? अभी एक बार बताओगे न्यूमरेटर में? मैं अभी बता देता हूँ. वो 5k/15k हो गया ना, लास्ट वाला 7k/15k देखो हो गया. 3k क्यों आया? क्योंकि मैंने 0 when x is 0 and y is 1, ये देखो 0,1 पूछ है यहाँ पे, तो when x is 0 and y is 1 it is 3k, 0 and 1. Got it? जिसका भी डाउट था. ओके. अभी आपको मैं क्वेश्चन दूसरा पूछा है. आई एम आस्किंग फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y when x equal to 2. ठीक है? You need to define y when x equal to 2. So what it will be? It will be y intersection x upon probability of x given at range 2. करेक्ट है? पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन मुझे x equal to 2 निकालना है. तो what is the total margin distribution when x equal to 2? ये मेरा x equal to 2 है. 30k. Perfect. Nice. अभी शायद समझ में आ गया है. And what I need to do now, अभी वापस मैं वही टेबल बनाऊंगा. And this time my table will go from 1 to 3. So 1 2 3. And how will it be changing? 1 वाले पे क्या देखूंगा? और मुझे देखना क्या है? मुझे देखना f of x at 2. ये f of y था यहाँ पे. f of x at 1,2 देखना है मुझे. तो 1,2 क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी 2,1. 7k. This is y. So yeah, 2,1 हो जाएगा 7k. तो first one will be 7k/13, that is 7/30. Second is 13/30. 1/3. And third is 1/3. 1/3 Second is 10. 10/30 है ना? Sorry. 13/30. हाँ, आप इसको ऐसे ले लो यार, आप समझ जाओगे, है ना? ठीक है? Perfect. Got it. चलो ग्रेट. तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया? Yes. परफेक्ट. बस भूल ना जाए एग्जाम को. नहीं भूलोगे. देखो बहुत सिंपल सा मंत्र है इसका, मैथमेटिक्स का यही है कि व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग ट्राई सॉल्विंग इट आफ्टर यू अंडरस्टूड. अगर आपने नहीं ट्राई किया ना उसके कुछ टाइम में, तो यू विल फॉरगेट इट. दिस वर्क्स फॉर मी आल्सो. अगर मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा जब मैं लिखूंगा नहीं. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग. अभी मैं आपको बस इमेज आपको शेयर करके भी बता सकता था, बट व्हाई एम आई राइटिंग इट मल्टीपल टाइम, ताकि मेरे दिमाग में मल्टीपल टाइम ये चीज आती जाए. तो इट्स वेरी इजी. हाँ, आप जितना उसे लिख के प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट मोर थोरो विद दैट टॉपिक. तो दैट इज द की. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी मोर इंटरेक्टिव विद दिस. तो आप जब क्वेश्चंस पूछते हो तो आपको और चीजें क्लियर होती है.
जैसे अभी एक ने पूछा ये वाला, तो अगर बहुत सारे लोगों के मन में अगर ये डाउट होता, बट पीपल टेंड नॉट टू आस्क, तो उनका भी क्लियर हो जाता है उस केस में। तो प्लीज बी ओपन इन दिस केसेस। अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे it's already 11:21. Yes, only 10 minutes, and I just need to give you one more thing so that you are this our PMF part for this thing is completed. Only that हाँ. integration part is left. अभी देखो एक क्वेश्चन is given, find the probability distribution. अभी देखो आपको x and y का पता चल गया, you need to find for x comma x plus y. ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, राइट? हाँ, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा x कैसे लाई कर रहा है, मैं ये वहां पे लिख देता हूँ 0 1 2 and 1 2 3. So my x is lying for 0 1 and 2 and y is lying for 1 2 and 3. ठीक है, तो जब भी आपको x plus y, x y, x to the power y, y to the power x, x minus y, x y z कोई भी दो रिलेशन एक्सिस में आते हैं ना, तो आपको ये देखना है कि अगर मैं इस ऑपरेशन लगाऊंगा इन सब वैल्यूज पे, तो मेरी कितनी अलग अलग वैल्यूज जनरेट हो सकती है, how much my values can get generated out of this. So for example, if I am doing for x plus y, what is the range of my values here? Let me check, there is a question here only or not. Yes, it's here only. So tell me, can I get 0? क्या मेरा x plus y कभी 0 हो सकता है? हाँ, नहीं, किस बिकॉज़ y 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। करेक्ट, ओके, हाँ, यस, यू आर राइट। सो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, थोड़ा सा आप लोगों को रीडेबिलिटी होगी। एंड z है मेरा x प्लस वाई के इक्वल, ठीक है। एक बार और बोल देता हूँ, डू नॉट आस्क अगेन, z क्या है, z इज x प्लस वाई, ठीक है। तो z मेरा 1 हो सकता है, करेक्ट, 2 हो सकता है z मेरा, हाँ, कैन माई z बी 2? यस, 1 plus 1 is 2. कैन माई z बी 3? यस, yes. Can my z be equal to 4? yes, 2. Okay, can my z be equal to 5? 5 possible. And can my z be equal to 6? No. So we stop till here. अभी देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कैसे इसका आंसर आएगा। यू जस्ट नीड टू थिंक ये वन आंसर x और y की क्या क्या वैल्यूज लेने पे आ सकता है। तो एट व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y विल आई गेट दिस वन? 0 1 0 and 1, करेक्ट। इसके अलावा किसी केस में बन सकता है क्या? आई गेस अभी 2 किस केसेस में बन सकता है? 1 1 पे। यस, एक तो बनेगा 0 2 से और एक 1 1 से, राइट? 0,2 1,1। करेक्ट, 0, 2, 1, 1। अभी 3 किस केसेस से बन सकता है, सोचो। 1,2 ओके। 3 0 यार 3 0 नहीं होगा, 0 3 करेक्ट। आप उल्टा नहीं सोचोगे इस केस में, राइट? हाँ, एंड 1 कैन बी 2, 1, राइट? करेक्ट। अभी 4 किस केस में बन सकता है? 2, 2। और किसी केस में बन सकता है? 1 3 1,3 करेक्ट। एंड 5 2 3 2 3 परफेक्ट। 2,3। अभी है ना, बस हम लास्ट स्टेप पे ही है, थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे तो यू विल गेट थ्रू दिस क्वेश्चन। अभी आई नीड टू, अभी देखो, आई हैव ओनली वन पेयर दैट इज 0, 1। सो व्हाट इज द वैल्यू एट 0, 1? व्हाट इज द वैल्यू एट 0, 1 यहाँ पे? 3k। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 3k। अभी यहाँ पे 2 है, तो पहले तो आप ये देखो 0, 2 पे क्या वैल्यू आ रही है? 0, 2 पे क्या वैल्यू आ रही है? 6k। एंड 1, 1 पे क्या आ रहा है? 5k। तो आई विल ऐड 6k plus 5k। गॉट इट? अभी इन तीनों के लिए क्या आएगा? इन तीनों के लिए मेरे पास आएगा 0, 3 पे मेरी वैल्यू है 9k, 1, 2 पे है मेरी वैल्यू 8k, एंड फॉर द 2, 1 आई हैव वैल्यू 7k। I'll add it basically, right? क्योंकि by this 2 combinations I am getting this result. Again, for this, what I'll do, I'll add 1, 3, that will be 11k, plus 3, 2 is, sorry, 2, 2 is 10k. 10k. Correct? And 2, 3, what is 2, 3? It is 13k. 13k. So what will be my final distribution? अभी देखो मेरा फाइनल आंसर कैसा आएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन अपने ट्यूटोरियल शीट में है,
इफ यू फाइंड 15th या 16th क्वेश्चन यही है, तो इसलिए आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस. सो व्हाट माय न्यू डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक, अभी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ना x होगा ना y होगा. नाउ माय डिस्ट्रीब्यूशन विल बी z. तो z will be ranging from 1 2 3 4 and 5, and what value am I getting? 3k, 3 by 72. भाई 21. कोई भी k नहीं छोड़ के आएगा, राइट? डू नॉट गिव एनी चांस टू लूज योर मार्क्स, राइट? 21. Second is 11 by 72. Third is 9 plus 8 17, or 17 plus 17 24 by 72. Fourth one is 27 by 72. नहीं 10 है ना, sorry, 21 by 72. And fifth case is 13 by 72. And this is your final answer. यस, मुझे ये समझ में तो आ गया सारा, बट आपने ऊपर ये z इक्वल्स टू x प्लस वाई और सर्कल के अंदर x y लिखा है, वो क्या चीज है? अरे इसको भूल जाओ, ये मैं आपको बता रहा था कि अगर x प्लस वाई जैसा केस आया, एक्स वाई जैसा केस आया, या x to the power 5 y to the power x, if this type of cases come, you follow this approach. That's why I wrote it. तो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि z इक्वल्स टू x प्लस वाई. I'll exactly give you the question. What is the question is asked that find the probability. Let me read that up. What is the question number? Yeah, no, it's not on the sheet. It's not in the sheet. It's different. Okay. I'm telling you what is the question. Exact question is find the probability distribution for x plus y, and this is previous one only, for this case only. So you got this whole derivative values you need to find for x plus y. So this अगर हमें x into y दिया होता, how would we do it? देखो अभी देखो, x into y मतलब आप x into y की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालो. तो बेसिकली I can get 0. x into y से 0 आ सकता है क्या? Tell me. Right, 0 आ सकता है. Can I get 1? Yes, I can get. Can I get 2? Yes, I can get. Can I get 3? Yes, I can get. Right? अभी किस पेयर से किस दो पेयर को मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर 0 आएगा? तो बेसिकली 0,1 से 0,1 0,2 0,3. तो 0 1 0 2 and 0 3, राइट? ओके. 1 वाले केस में 1 1 ही हो सकता है, राइट? You just have to satisfy the mathematical condition. Okay. Yeah, correct. You need to satisfy that particular equation, or what we can say, particular polynomial that is given. Insert the values, find the points that are meeting that particular requirements, and then sum it up. The values on it. Got it. And then write the distribution. So this will be your final answer. That will be graded as complete marks. Just one doubt, yes, one more doubt. हमने यहाँ पे x plus y का केस में लिया है, तो हमने लास्ट में सम की है जितने भी हैं प्रोबेबिलिटीज. हाँ. जब हम x into y का डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो भी हम प्लस करेंगे या तब हम मल्टीप्लाई करेंगे? भाई बट ऑब्वियस मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, ऐड ही करेंगे. व्हाई? बिकॉज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ये और वाला केस है, राइट? इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा. सो वी विल डू दी और केस, राइट? ऐसा नहीं है कि इन तीनों पे आएगा तभी मेरा 0 बनेगा, ऐसा तो नहीं है ना, राइट? इट इज गोइंग फॉर और केस, दैट्स व्हाई. सो विल जस्ट ऐड इट अप. बस ऐड कर लेंगे. ओके. चलो ठीक है. आई एम एंडिंग अप हियर. सॉरी गाइस, आरसीबी का मैच इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. So I hope you guys I need your screen 2 minutes. I'm just not. Sorry. CSK lost, it seems. I do not know CSK lost or what, but I know that RCB is going great. Yes, we are done, right? Yeah, we are done. So, may I leave on that? Yeah, you can leave the call. It's quite tough, it seems to be, for CSK. I hope it gets more tough. Oh, you're an RCB fan? Yeah, actually, I think that Virat Kohli should get at least one time chance to lift that trophy. MS Dhoni has got it many times, yeah. Just think of that man. Every time he tries his best and then he do not reach to the conclusion. For him, I want RCB to win. Okay, done. Done? चलो. Yeah. Guys, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज की क्लास का. कौन सा क्वेश्चन है ट्यूटोरियल में? This one? कौन सा क्वेश्चन है ट्यूटोरियल में? क्वेश्चन है वो ये 17th. ठीक है. थैंक यू सो वाला तो ऐसे आज ही कर डालो. कई
कहीं भूल ना जाओ हाँ। इसलिए, है ना, आज ही कर डालो उसे। नहीं, मैंने इसको अच्छे से लिखा है क्योंकि बहुत ही लेंदी था और काफी सारी चीजें हैं इसमें। हाँ, एक्चुअली द रीजन व्हाई आई मेड इट लेंथी बिकॉज इस एक ही क्वेश्चन में हमारे 5-6 क्वेश्चन हो गए ना। मैं 5-6 अलग-अलग क्वेश्चन बनाता तो हर चीज को आपको समझने के लिए नया पेस लगता। तो इट ये वाज क्या, ये सारी चीजें नहीं पूछी हैं इस क्वेश्चन नंबर 17 में? नहीं, सारी नहीं पूछी है। अच्छा, ओके। एक्चुअली देखो मैं आपको बताता हूँ। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 18, देयर इट इज आस्क्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y. सेकंड इज आस्क्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, राइट? तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, जो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में करा है, दे विल क्लब बी कर दिया है। टू यू इन डिफरेंट केसेस। हाँ, तो क्लब कर दिया आपने ना? हाँ, मैंने क्लब कर दिया फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन अ सिंगल थ्योरी ऑल ठीक है। कॉन्सेप्ट्स, दैट्स हाँ, 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 ठीक है, समझ आ गया। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। ओके मैम। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ लो इसको एंड इफ Thank यू you, गेट Yash. यू कैन Bye. आस्क। बाय बाय। Thank you, Yash. Okay. Thank you, Yash. अच्छा, tomorrow we will Thank you, Yash. start with the tutorial sheet 4. Okay. ओके डन। थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा, है ना? ट्यूटोरियल शीट 3 सी 3 ट्यूटोरियल 3 वही एक जंप हो गई पूरी। ओके, आई वोंट जंप, डोंट वरी। 3 पे ही स्टार्ट करेंगे, देन 4, देन 5, देन 6। अभी 2 पे तो सारे कहाँ हुए थे? बट बहुत सारे। अब वही दैट्स व्हाट आई रिक्वेस्ट यू गाइस, क्योंकि है ना, सी क्वेश्चन बहुत सारे। इफ आई डू 1 ऑल ना, हर किसी को समझने में समझाने में टाइम लगेगा। तो व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज पुट सम एफर्ट्स एंड सी द सॉल्यूशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय सर एंड ट्राई टू सॉल्व इट। यू गॉट द थ्योरी, यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड। एक्चुअली उसमें बहुत सारे सोल्यूशन दे भी तो नहीं रखे ना, डायरेक्ट आंसर दे रखे थे ना ट्यूटोरियल यार शीट वो में हमारे पता है, वो कल। मेरे भी डाउट्स है, वो मेरे भी डाउट्स है। मतलब आपसे अच्छा। यू नो व्हाट इज माय टाइमिंग। मैं 7:30 को घर आता हूँ, 15 मिनट में मैं फ्रेश अप होता हूँ एंड आई स्टार्ट एट 7:45 लर्निंग कॉन्सेप्ट दैट आई टीच यू। तो उस केस में आई टॉक टू आइदर मेनी ऑफ द ठीक है। कलीग्स हियर एंड आई गेट द इंफॉर्मेशन व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट। तो ये सारे डाउट्स मेरे भी है अभी, और कोई अच्छा। क्लियर करने वाला ही नहीं है। दैट इज द बैड थिंग। हाँ, तो इवन आई डो नॉट नो हाउ टू गो विद दिस, एंड आपको गलत पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, तो इट्स बेटर आई डू हाँ, नॉट हाँ, टीच दैट, इसलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओके, चलिए, ओके। ओके, ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।